Caroline Age from 1625 to 1649. This age is named after Charles I, who reigned over England from 1625 to 1649. Caroline is derived from Carolus, the Latin version of Charles. This age is also a part of the Puritan age, which is 1620 to 1660. The age of Caroline is an age of poetry of three kinds of schools: metaphysical, Cavalier-land, and Puritan schools of poetry. Caroline age, as I told, it was from 1625 to 1649. King Charles I ruled after his father, James I. This age also called Age of Milton and Age of Puritans. King Charles versus Parliaments. Two groups of Christian in this age. Protestants versus Catholic. Puritans with Protestants, and Puritans didn't like Catholics, and so Protestants. Puritans. It was a group of Reformed English Protestants who sought to purify the Church of England from its Catholic practices, maintained that Church of England was only practically reformed. King Charles married Catholic girl, so society get against the king. First parliamentary meeting was established on 1625, which was dissolved. Second is on 1626, dissolved. Third on 1629, dissolved. Fourth one was from 1640, also dissolved, and again in 1640, which was not dissolved. King Charles versus Parliaments. जो लीडर थे यहाँ पे पार्लियामेंट के इस वक्त पर, वो थे जॉन पाइन. English Civil War started on 27th English Civil War started on 22nd August 1642. Charles wins firstly, then Oliver trained Parliament's army to win. Charles stay on the same arrogance. Parliament tries compromise from both sides, but King Charles denied. No other option left but to kill Charles, so on 13th Jan 1649, execute Charles. Parliament leader Cromwell rules. In this period, जब चार्ल्स को फांसी की सजा हुई, तब क्रॉमवेल जो थे वो रूल कर रहे थे, वो लीडर थे पार्लियामेंट के. और यहाँ से हमारा कॉमनवेल्थ एज या पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि होता है 1649 से 1660 तक का. यहाँ से हमारी एज शुरू होती है मिल्टन की, जो कि कहलाई एज ऑफ मिल्टन. और जो मिल्टन थे वो बोथ एजेस में थे, जब वो चार्ल्स फर्स्ट रूल कर रहे थे तब भी, जब कैरोलाइन एज थी, और जब कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुआ, जब पार्लियामेंट ने रूल करा क्रॉमवेल ने, तब भी. ड्रामा couldn't develop in this age and it was the beginning of drought. इस टाइम पीरियड में जो ड्रामा था वो डेवलप नहीं कर पाया, और ये जैसे एक तरीके से सूखा पड़ गया था इस टाइम पे कला में. 1642 playhouses were closed by an act of parliament. Prose. It was a peak. Socio-political, science, philosophy, science, religion, colonial voyages, popular and interesting grappling. इस टाइम पे वो थी colonial voyages की. Thomas Brown, Religio Medici in 1642. ये एक religious plus science work play था. Pseudodoxia, Epidemia
Epidemica in 1646, Hydrotopia on Buria in 1658। ये जो वर्क था ये रिलीजियस प्लस हिस्ट्री और साइंस वर्क का एक मिक्सचर वर्क था। इनके जो फिक्शंस थे, जो उस टाइम पे फिक्शन थे, वो फ्रांसिस गॉडविन के थे, जो कि था द मैन इन द मून इन 1638। पोइट्री थी मेटाफिजिकल रिलीजियस। मेटाफिजिकल पोइट्री कंप्लीटेड थी। रिलीजियस पोइट्री और कैविलियर पोइट्री सपोर्ट्स चार्ल्स फर्स्ट कोर्टली। कोर्ट में जो किंग के लिए लिखी जाने वाली होती थी वो कैवेलियर थी, जो कि सपोर्ट में होती थी हमेशा चार्ल्स के। नेक्स्ट है कैवेलियर पोइट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन। जो हमारे कैवेलियर पोइट्स थे वो इन्फ्लुएंस्ड थे बेन जॉनसन से, जो कि थे थॉमस कैरवे, जॉन सकलेन, जॉर्ज विटर, विलियम ड्रम्बलन, जॉन क्लेवेलैंड, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक। The greatest after Shakespeare outside drama. His works are divided in four periods. Poems. Coleridge wrote on the morning of Christ's Nativity in 1629. Travelling time. Horton wrote Algoro il Penseroso Comus in 1639. From 1640 to 1660, Prose wrote Areopagitica in 1644 against Parliament। ये जो वर्क था ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट था। ऑफ क्रिश्चियंस डॉक्ट्राइन couldn't published। ये जो वर्क था ये लिखा गया लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था। लेट पोएटिक ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, एक मेन वर्क था। पैराडाइज लॉस्ट इन 1667 ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था और ये एपिक पोएम बना था। पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में लिखा गया। सैमसंग एपोगनिस्ट ये क्राइस्ट एंड सैमसंग एज एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा रेनेसां पीरियड खत्म होता है।